हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोड मोस्टली लर्निंग। सो बेसिकली जैसे प्लान था, आज हम वेबिनार करने वाले थे एआई के ऊपर। तो आज हमारे साथ है नेत्रा, इज बेसिकली एआई स्पेशलिस्ट एंड आल्सो इज अ राइटर। सो वेलकम नेत्रा फॉर दिस अमेजिंग वेबिनार एज ए स्पीकर। Thank you so much. Yeah, I'll just share my screen so that we can, discuss what the webinar about today is going to be. यस सर। And let's get started. For yes, you can see my screen. या Okay. So basically, today's webinar is all about, how AI is there in the daily life, how to use it as a student, and how it is used in the workplace. But before I get started, I'll just simply introduce you a little to me and why I'm giving this talk. So I am an incoming AI analyst at Bain& and Co. And I'm also doing research at London Business School. Apart from that, I've written 4 books, though 2 and 3 of some of them are on poetry and some of them are on AI. So I think that will be fascinating. Baki, I'm from a computer engineering background, and I think जो भी आज सुन भी रहा होगा webinar is all mostly people from the technical background and even professionals who are coming from tech. But this webinar is for everybody, so I hope you can understand all of it. And yeah, I'm a part of a lot of AI clubs and all, but I won't bore you with that. I'll just give you a quick idea of what I've written. My recent book is on called AI Cop, which combines digital forensics with artificial intelligence. And we can discuss this more later in a different podcast, probably. And I've also used AI to write a poetry book, basically poems and how AI interprets poetry. So the links I can probably list in the description box. And yeah, let's discuss what we're going to talk about today. So AI is such a buzzword ना, हर जगह ही AI की बात हो रही होती है and specifically generative AI की बात हो रही होती है. But the truth is that a lot of people don't know कि कहाँ कहाँ actually sectors हैं जहाँ AI genuinely apply हो रहा है. मतलब AI is not just ChatGPT, right? AI is about a lot of other things and it's used a lot of other places. But बहुत सारे ना taboos and myths होंगे. Like I'm sure you also, Chetan, have heard a lot about, AI सबकी jobs replace कर देगा. AI अब, खुद ही self aware हो गया है and all that. So I hope we can demystify these rumors. जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. Artificial intelligence is like just growing and is there to help us out. And then we'll tell you how you can use it as a student in the workplace, and we can also touch a little on cybersecurity, which is Chetan's expertise. And yeah, that's what we're going to discuss. So when you think of AI, काफी लोगों को ना वो होता है डाउट कि डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एनएलपी अलग है, ये एआई अलग है. So AI is just an umbrella term, right, which has a lot of other things that come under it. तो वी हैव मशीन लर्निंग जिस पे काफी लोग कोर्सेज कर लेते हैं एंड उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्ड्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, ये न्यूरल नेटवर्क्स, ऑल ऑफ दैट. बट इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है. ऑल ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Basically anything that uses data to understand or generate something new is AI. And chatbots and all come under NLP. We have computer vision, and generative AI now has come. So any AI that can generate something new is generative AI. But it's as simple as that. Then there are a lot of other words you might have heard of. Robotics भी है, expert systems है, ये है वो है. All of these are all overlapping terms, but pretty much everything comes under a simple ideology कि data use होगा ताकि आप उस data से या तो कुछ पता कर लो, या कुछ predict कर लो, या कुछ generate कर लो. Is there anything you want to add to this, Chetan? Do you want to add anything? मतलब, is there any नो अलग definition of AI that you no? Cool. So yeah, there are different types of AI. One of them is narrow या weak, which basically एक ही task का एक simple line of tasks ही कर सकता है वो. Virtual assistants हो गए. You can ask weather क्या है आज का, या क्या होने वाला है आगे, in terms of tell us about the news, current affairs, all of that. Basically एक दो task ही कर पाता है वो. Recommendation systems also is what it just recommends you something. So that's singular task. General AI, for the matter, is something which is able to understand and apply knowledge across a lot of other things. But वो अभी आया नहीं है. We are still in the initial weak part of AI, but we are heading towards the general AI.
तो जब तक हम जनरल एआई ही अचीव नहीं करेंगे, तब तक ये थ्योरी ऑफ रोबोट्स कैन अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग दैट अ ह्यूमन थिंक्स, या वो हम ह्यूमंस को कम्प्लीटली ही रिप्लेस कर देंगे या जॉब सारी चली जाएंगी, ऐसा कुछ होएगा ही नहीं। बिकॉज राइट नाउ तो हम बहुत ही मतलब we're just developing upon what AI actually is. And self-awareness of, have you seen that movie, Robot, जो रजनीकांत robot? Right, Have you seen the movie? right, Yeah, उसमें that robot becomes completely self-aware, उसकी खुद की emotions आ जाते हैं and all that. वो सब I don't think will happen at least in another decade or two, because अभी तो we are simply just figuring out कि चीजें हो कैसे रही हैं. Then AI is there in various sectors. Like it is not just technology, yeah, not just chat GPT. It is there हर जगह. Like healthcare में आपकी medical diagnosis हो गए, treatment कैसे कर सकते हैं, क्या 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 possibilities हैं आपकी data charts को देख के, ये सारी चीजें healthcare में भी use होती हैं. We have it in finance, education, management consulting. A lot of places, basically anywhere and everywhere, has the possibility to have AI in it. Because AI helps you with data, and data तो हर जगह से मिल ही जाता है, right. right? So these are the sectors of AI that we basically talk about. But coming to the most interesting part, कि अगर आपको लेनी है AI as a career, there are a lot of tips and tricks and different methods that you can understand AI. And for the matter, Chetan also probably can give you a basic idea of how students use या make up a career in AI, because he himself has been like Right. making one. Yeah. So what are your tips? सो बेसिकली अगर एआई को एज ए स्टूडेंट के लिए रेफर किया जाए तो काफ़ी चीज़ें, अगर मैं सिंपल ऐसा बैक बेंचर की बात करूँ तो असाइनमेंट हो गए, और एज अ फ्रंट बेंचर की बात करूँ तो हम सिलेबस में जो है आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। और जैसे अभी ऑनलाइन डिग्री हो गई या ऑनलाइन कोर्स हो गए, हम हमारे पे इतना एक्सेस है कि हम कहीं से भी रिमोटली उनके बारे में रीड आउट कर सकते हैं, और एआई वहाँ पे एक स्टेप आगे आ जाता है। जो हमारे पे बल्क ऑफ पीडीएफ आ जाती है, बल्क ऑफ हमारे पे ब्लॉग आ जाते हैं, लाइक उन्हें समराइज करना हो गया, उन्हें इजी वे में हमें हेल्प करना हो गया स्टडी में। स्पेसिफिक आपने Yeah. मेंशन भी कर रखा है, लाइक अकेडमिक पार्ट हो गया, सर्टिफिकेट एंड मोक इंटरव्यू हो गए, उनकी भी प्रिपरेशन करवा सकते या तो अगर आपको करियर बनानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फर्स्ट एंड द इजीएस्ट वे इज कि आप डिग्री ही कर लो. मतलब टेक अप अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री, उसमें एआई का थोड़ा पार्ट आ जाएगा, या फिर आप तो देर आर मास्टर्स इन डेटा साइंस, मास्टर्स इन रोबोटिक्स. तो इफ यू डू द डिग्री तो आपको ऑटोमेटिकली वहां करियर बननी ही बननी है. बट मान लेते हैं दैट यू गॉट सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, or probably not engineering in general, but you still want in a career in AI, there are lots of online degrees right now. Even IITs give them, जो completely virtual होती हैं, and आप एक साल के अंदर ही काफी चीजें सीख सकते हो. You give your tests, you do all of that, and then you have a credibility कि हाँ, I have a certification जिससे मैं ये बता सकती हूँ that I have a degree in artificial intelligence. But now if you're in a workplace and you have to upskill yourself, you have to know about AI ताकि आपको अपने workplace में use कर पाओ आप, तो सर्टिफिकेशंस तो काफी फिर भी मिल जाएंगी. यूडेमी, कोर्सेरा, यूडासिटी, and MOOCs platforms are offered by a lot of colleges. Like I myself did a few certifications from University of Helsinki. It was absolutely free, and the certification course also was very good. And you also have NPTEL. And NPTEL courses are काफी good क्योंकि काफी ही अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं. You give a test, and आपकी कॉलेजेस भी रिकॉग्नाइज करते हैं NPTEL कोर्सेज को. तो यू कैन टेक इट अप, एंड बहुत अफोर्डेबल होता है. आई डोंट थिंक इतनी इशू होती है क्या यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर मेकिंग अ करियर इन एआई. बाकी YouTube, I mean, is one of the best sources, because so many people like me, you, Chetan, everybody, we're just putting up our knowledge on YouTube for everybody to know. So you can literally surf the web and learn about anything and everything that you want. तो अगर your motive इसकी सिर्फ AI के बारे में जानना है और चीजें करनी है, तो go to YouTube, take up free resources and learn from everybody. But अगर आपको डिग्री चाहिए, आपको कहीं दिखाना है, then you should take up a certification or do a degree in that. बाकी you should be a part of a lot of AI communities. There are a lot of people who are figuring out कि AI मतलब हाउ इज इट इवन कमिंग इन द फर्स्ट प्लेस, कि क्या चल रहा है. इतना न्यूज है, रोज कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आ रही हैं. फॉर द मैटर विद दिस सैम ऑल्टन फायरिंग, मतलब जो सीईओ हट गया था ओपन एआई का, रोज हर 12 घंटे में कोई न्यूज आ रही थी. सो टिल द टाइम यू आर नॉट कनेक्टेड और नेटवर्क्ड विद पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट,
you won't come to know the latest news. So I would say, make friends who like this topic or be in touch with people who know about this. And you can write articles, you can write books, you can read the paper. So how much ever you are interested in knowing more, उतने आप efforts लगाओगे तो आपका career automatically इसमें बन ही जाएगा. Baki, there are webinars like how we are hosting one. There are conferences, events. You can write publications, attend वहाँ. So of course, मतलब जितना जाना है उतना तो जा ही सकता है इंसान. So it's all upon you and how much you want to, make your career in this. Then how do you use AI as a student? So there are like a lot of options of how you can use AI to your advantage. Would you want to share something on how you use AI, Chetan? या सर, जैसे एआई का मतलब एज अ वर्क प्रोफेशनली या स्टूडेंट काफी इम्पैक्ट है एज अ प्रोडक्टिविटी. जैसे अगर हम कोई भी काम है जो हम लाइक अगर हमें मेलिंग करनी है, लाइक हम पहले उसके मेल के बारे में सोचेंगे कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं, और वहीं पे हम किसी भी एआई टूल का नोट मैथड या चैट जीपीटी या ब्रैड या कोई भी हम एआई टूल लेते हैं, वहां पे हम सिंपल हमें डालना है कि लाइक हमें एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है, रीजन बिहाइंड वो मैं विद इन अ सेकेंड, नॉट मिनट, विद इन अ सेकेंड वो हमें पूरा सब्जेक्ट के साथ एक पे ऊपर मेल बना देते हैं, मेल लिख के दे देते हैं, राइट करके दे देते हैं. और अगर हमें अकेडमिक का भी काम करना है, लाइक अगर स्टूडेंट है, जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया था, असाइनमेंट में या हमें किसी भी टॉपिक के बारे में रीड आउट करना है. जैसे अगर हम एक फील्ड है, जैसे एआई हमारे लिए न्यू है, तो अगर हमें उसके बारे में जानना है तो हम एआई से ही जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितने भी हमारे चैटिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारा चैट जीपीटी हो गया या ब्रैड हो गया, उनमें एक चीज सिमिलर है कि हम उनसे जितना कम्युनिकेट करेंगे, उनसे हम जितनी चीजें पूछेंगे वो उतना ज्यादा ट्रेन होगा. उस बेस पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी. जो हमारा काम है वो जहाँ पे पहले 1 आवर ले थे, वहां पे वो माइट भी वो 10 मिनट या 30 मिनट समथिंग ले. So yeah, now to there are concepts of custom GPTs also that राइट. came. Matlab, yeah, like Chat GPT has सबका knowledge for Google News, right? Custom GPT is something ki like if I have my company and say the company is about architecture, ठीक है? And I somebody is coming, a client is coming, तो मैं उसको अपने इतने सारे फाइल्स नहीं दे सकती कि आप पहले मेरी पूरी हिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद जो पूछना है पूछो. That makes no sense, not for the client, not for me, not for anybody. So what custom GPT does is इतने सारे फाइल्स आप जो है custom GPT को दे दो, वो पूरी तरह सीख लेता है कि क्या है, क्या पास्ट था, क्या प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, ग्रोथ रेशो कितनी लग रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड द क्लाइंट कैन सिंपली आस्क all their doubts या all their questions to this custom GPT and वो आपको directly answer दे देगा. So it is tailor fit to your needs. That is why it is called a custom GPT. जिसके ऊपर ही इतनी सारी उसके बाद ही all this open AI fiasco happens. राइट. But yeah, it is a great idea that you can also implement not just as a student but as a professional also. And for the matter, so I had this opportunity of curating and making 2 courses on AI, right? And I had so much of data and I had to create a question paper. तो मैंने तो मेरा सारा डेटा जो है फीड कर दिया एंड आई सेड कि इसके ऊपर मेरे को एक क्वेश्चनर बना के दे दो. एंड इट वाज सो ब्रिलियंट. मतलब इट गिव्स यू ऑप्शंस, इट गिव्स यू एमसीक्यू में अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है, यू नो द राइट आंसर टू इट, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस बना रहा था. सो एआई हैड द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एंटायर क्वेश्चनर फॉर मी. Of course, after that you edit yourself because everything requires a human touch, but it completely helps you out to increase your productivity at a massive scale. And you can do it for research also. Matlab, if a lot of places and a lot of professionals need to do secondary research, be it consulting, be it research, whatever it be, so you can do all of that together also. There is also beta testing version of Google which gives you, आप कुछ क्वेश्चन सर्च करते हो तो अब ना गूगल आपको एक एआई एक सर्च दे देता है ताकि आपको राइट. सारे लिंक्स नहीं देखने पड़े. Yeah. So even companies, biggest of companies like Google are now adapting AI so much so that they make your life easier. कहाँ आप पहले 50 लिंक्स देख रहे थे, राइट. अब it gives you an answer directly. अगर आपको आंसर अच्छा लग गया तो ग्रेट, नहीं तो आप of course you can go through the links and see what further information you want to find. बाकी अभी जैसे there उसमें is अभी जैसे हमने yes बताया yes कि कस्टम जीपीटी एंड लाइक काफी काफी कंपनियां ले रही है, तो लाइक ऑल्सो इज अ माइक्रोसॉफ्ट इज अ वन ऑफ एग्जांपल जो एज अ ओपन एआई के साथ, नोट अ पार्टनरशिप, वो भी उनके साथ काफी काम कर रहे हैं अपने विंडो के लिए. लाइक उन्होंने अभी को पायलट लॉन्च किया था जो आई गेस सभी yeah विंडो में अभी
वर्किंग है विंडो 11 में। तो बेसिकली उस Hmm. वो भी आप सिंपल, अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर नहीं खोलना, आपको कोई फाइल ढूंढनी है, तो यू कैन यूज अ को पायलट, यू ऑल्सो यूज अ ब्रिंग चैट फॉर दैट। Yeah. Microsoft Bing, no? Yeah. A lot of competitors are now come. So a lot of things are now there in, within a matter of 1 year, I think, कि काफी ही मतलब AI adapt हो गया है. 2023 के starting में मतलब ChatGPT was just on the rise, and now there are competitors, there are big companies, there are custom GPTs. It is everywhere and anywhere. राइट। So yeah, if anybody wants a career in AI, I think it's the best time to start one because अभी चीजें चल रही हैं and everybody's on to this. एक बार सबको पता चल गया, then it becomes such a big gap for you to catch up. So yeah, if you're a student or a professional who's wanting to get into this, I would strongly recommend कि आप देख लो about AI. Plus, I mean, जैसे there was a computer revolutionary, मतलब आ गया था, there were computers, laptops, and all the written work was now digitized. There was a revolution that happened. वैसे ही I think AI is a revolution which has the capability of helping us so much. अब तो हम imagine भी नहीं कर सकते कि हमारी life laptop या PCs के बिना काम करे. वैसे ही after a few years we won't be able to imagine a life without AI. राइट एंड बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप अपना सारा काम एआई से नहीं करा सकते. ऑफ कोर्स आपकी खुद की भी कॉग्निटिव स्किल्स रहनी चाहिए. अगर आपने सब कुछ एआई से करा लिया तो आपका क्या फायदा, मतलब. So you have to use AI to your advantage and not replace yourself with AI, right? And coming to where all you can see AI nowadays, मतलब एक्चुअली किसी से भी पूछो कि आपने कहाँ देखा है एआई, तो उनका पहला आंसर होता है Cortana, Siri, Google Assistant. But that is not the only place that AI is coming into play. You have recommendation systems, Netflix, Spotify, any Amazon Prime. हर जगह ही मतलब there is data coming into play, and wherever there is data, there will be artificial intelligence. So even people are starting to make movies out of AI videos. बना के they are compiling them into movies. You can have digital art. Even news channels now have news anchors. Like even Aaj Tak has one news anchor who is an AI generated anchor. So she's a AI anchor who talks, and it looks so real, but it is not. It is AI. And there are different. I mean, there were so many rumors, right? You had a page जिसपे किसी ने ना एक website का वो बनाया हुआ था drawing, and they gave it to the computer, and the computer was able to generate the code for ये website कैसे बनेगा. So you can make website, apps, whatever it be, and all of that AI अब implement होना शुरू हो चुका है. So if you think it is still restricted to Siri and Cortana, that is not it is. It is there everywhere. Is there any place else that you have seen, Chetan, that I missed out? नॉट राइट नाउ, जैसे आपने बताया वेबसाइट के ऊपर, तो काफी सारी वेबसाइट, जैसे हमें वेबसाइट का मैं बोलूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए, एक फ्रंट एंड बनाने के लिए कम से कम मिनिमम एक वेबसाइट के लिए हाफ डे या 2 डे लगते थे, पर अभी जैसे काफी प्लेटफॉर्म है, जैसे डोरपल हो गया या और भी प्लेटफॉर्म है, लाइक वो विद इन अ सेकेंड, मतलब आई गेस वो 5 मिनट भी नहीं लेते, वो 1 to 2 मिनट में आपको एक पूरी वेबसाइट बना देंगे, अगर आपको पता है कि उस वेबसाइट में कैसे कैसे आपको इनपुट देना है। ऐसे हमने अभी न्यूज एंकर का बताया, आज तक रियली यूज दैट न्यूज एंकर, एंड स्टार्टिंग में जब उन्होंने वो यूज किया था, तो वो रियल ही था, वो बाद में डिस्क्लोज हुआ कि नहीं वो एक एआई मशीन है, वो ऐसे ऐसे न्यूज है। और डेली लाइफ में हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी आया चैट जीपीटी, एआई के बारे में अभी बात करें, हम उसे काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब सबसे पहला एग्जांपल है जहाँ से वो रिकमेंडेशन सिस्टम चालू है, नेटफ्लिक्स हो गए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो पहले से है। और फिर हमारा एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, जहाँ पे हम उन्हें डेली बेस पे, चाहे हमें कॉलिंग करनी हो या हमें कोई भी चीज हमें फोन से करवानी हो, तो हम यू कैन वी कैन यूज। और वन मोर थिंग, users add on the smart home and IoT device, they also use a Yeah, AI something. I guess there is a misconception with the IoT is a different for AI, but AI also is IoT inbuilt. yeah. It is all overlapping now. मतलब since AI is such a big term, मतलब it is used everywhere, and कुछ ना, as I said before, wherever there is data, there will be AI. And yeah, so but we need to know that if there is so much of data being used, तो आपकी privacy concerns आ जाती हैं. You Right. get to know that I don't want कि मेरा all my data goes out somewhere just ताकि मेरा data personalize हो जाए.
अब तो इट इज लाइक आप कुछ भी मेंशन करो, आई से आई वांट टू बाय अ न्यू कार एंड सून मेरे इंस्टाग्राम पे एड कार आना शुरू हो जाते हैं. राइट. So all of these are privacy concerns that are coming, which is why cybersecurity comes a lot into play, where you have to have, information security. And I think that you can take from here because you're the expert on this. या बेसिकली जैसे अगर मैं रिकमेंडेशन सिस्टम की बात कहूँ, या अभी आपने एक एग्जांपल लिया था कार के ऊपर, कि अगर हम ऐसा हमने गूगल पे सर्च किया कार के बारे में, तो हमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे कार बार बार दिखने लगती है. आई द कंसेंट ऑफ अ प्राइवेसी, पर हम खुद अलाउ करते हैं अपने आप को ये सारी चीजें करने के लिए. हर एक एप्लीकेशन में एक मैसेज आता है कि हमें ये परमिशन अलाउ करनी है नहीं करनी, वो हमारे ऊपर है. तो लाइक मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं बिना पढ़े. तो एक हमारे वो सबसे Hmm. बड़ा एक ह्यूमन पॉइंट है कि हमें उसे थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ना चाहिए. और जैसे अगर एआई की बात करूँ, तो एआई काफी यूज किया रहा है साइबर सिक्योरिटी में एज अ डिफेंस साइड, नॉट ऑफेंस, डिफेंस Hmm. साइड. आपके प्रिडिक्शन हो गए कि अगला अगला अटैक क्या हो सकता है, क्या नहीं. अगला अटैक क्या हो सकता है, लाइक कि अगर हम सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, तो एआई हमारी एक हेल्प करता है न्यू तरीके से माइंडसेट को डेवलप करने के लिए इन साइबर सिक्योरिटी. कि अगर हम Hmm. ह्यूमन बिहेवियर में एक कॉन्सेप्ट आता है साइबर सिक्योरिटी में, सोशल इंजीनियरिंग, जो बेसिकली जो हम बिल्कुल मेल होता है आपके ह्यूमन साइकोलॉजी से, आपका माइंड कैसे वर्क करता है कैसे नहीं. तो वहां पे हम एआई का यूज करके न्यू माइंडसेट से एक लाइक क्या बोलते हैं, पॉलिसी मेक कर सकते हैं. हम एआई के लिए भी पॉलिसी मेक कर सकते हैं, और उन्हें यूज करके हम एक पूरा प्रोटेक्शन बना सकते हैं. तो जैसे इसमें लिखा है फिशिंग डिटेक्ट के लिए, तो उसके लिए एक टूल, काफी सारे एआई के टूल है जो उन्हें एनालाइज करते हैं मेल को. पहले एक सिस्टम था जो जीमेल पे था, उसे ये नहीं पता, वो फिल्टराइज नहीं कर पाता था कि ये स्पैम मेल है या नहीं. पर अब क्या हो रहा है, अब कोई Yeah. भी मेल आती है तो देखा होगा एक अलग से स्पैम फोल्डर होता है, वो हम उसे स्पैम में नहीं करते, वो अपने आप फिल्टराइज कर लेता है. इज ऑल्सो Hmm. यूज Yeah. एमएल एंड एआई समथिंग. एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी हमारे काफी सारे टूल्स है जो इन्हीं सारे डाटाबेस को लेते हैं. बेसिकली एआई और एमएल का यहाँ पे एक ही चीज है, आप जितना उन्हें डाटा दोगे वो उतना चीजें एनालाइज करेगा. अगर आप वहां पे उसे एक सिंपल एक लिमिट तक डाटा दोगे, आप उसे जितना बताओगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो उस हिसाब से आपका एआई ट्रेन करेगा, और वहां पे वो साइबर सिक्योरिटी में एक लाइक एक अच्छे उस पर रहेगा, उससे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डू है क्या डोंट है. तो ये चीज है वहां पे. Yeah. मेन आपका ये आ Even जाता है कि आप उसे कैसे ट्रेन करो, आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है true. उसके पीछे, आपको अच्छे के लिए करना है या बुरे के True. True. There are two sides to a coin, Harpal. लिए. You can use AI to get into people's systems and mess it up, but at the same time, you can use AI to actually protect and have ethical work that is getting done. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक मूवी का एग्जांपल दिया था, रोबोट. आई गेस उसके दोनों Yeah. पार्ट सबने देखे हैं. कि रोबोट में वो स्टार्टिंग में, रोबोट वन में स्टार्टिंग में चिट्टी इज अ गुड रोबोट, पर Yeah. उसने चिप लगा के, लाइक मुझे डॉक्टर का नाम याद नहीं उसे, लाइक जिसने उसमें वो बैट चिप लगा के उसे पूरा ही एक अलग कर दिया, जहाँ पे उसमें इमोशंस नहीं Yeah. थे, पूरी एक अलग ही उसकी वाइब्स हो गई थी. तो वो आपके ऊपर, आप एआई को अपने कैसे ट्रेन कर रहे हो, जो आपकी मशीन है, आप उसे गुड के लिए यूज कर रहे हो या बैड के लिए, वो जिस हाथ में आएगा उस साइज आएगा. Yeah. True. That is why I think now there are ethical considerations जो हर जगह यूज होनी शुरू हो गई हैं. Everybody is talking about trustworthy AI. कि राइट. हम how do we trust AI to be of our help अगर हमको श्योरिटी नहीं है कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा है. So yeah, I think ethical considerations are very required. मतलब होने ही चाहिए. Countries, companies should put it. But apart from them, we ourselves also should know कि यार नहीं करना है, मतलब कुछ और किसी को हार्मफुल अगर कुछ होगा. लाइक डीप फेक्स काफी ही ज्यादा लीक होने लग गए थे लेटली, राइट. वेर पीपल वेर कंप्लेनिंग कि आप हमारा फेस कैसे यूज कर सकते हो फॉर अ डीप फेक वीडियो. And so just as a person, if you are somebody who's getting such videos, you should just not send it again. That is how you can implement your ethics. So data is something very sensitive to everybody. And we should know, ठीक है, मतलब if I have a college project and I'm learning how to make a deepfake, I will make a deepfake which at least does not harm anybody's sentiments or राइट. does not, do anything else. So अपने खुद के ethics and moral conduct तो होने ही पड़ेंगे, but at the same time it is highly recommended कि corporates, companies, organizations and countries, they put their own
रूल्स कि कैसे एआई यूज होना चाहिए ताकि सेफली भी यूज कर पाए और बेस्ट तरीके से यूज करा जाए. So ethical AI is something which is, I think, the next upcoming thing. Yeah. I guess that's pretty much it from my side. Is there anything you want to add, Chetan? No, is a thank you for this amazing webinar, basically. Um, I Yeah. hope everyone is a like and everyone enjoyed this webinar and grab the good knowledge about it. Yeah. Oh, okay. Thank you.